And thank you, Chairman Sir. Thank you, Rajkot Branch, for allowing me to take this session. Second last, of course, when it comes to the calendar year. And great to see a large audience on a very interesting subject. Anyway, so thank you, friends. So topic for today is taxation of trust. And friends, over the period of years, especially after the pandemics, we have witnessed tremendous changes. You pick up any budget from 2020 onwards to 22, you see max number of amendments happening in the area of trust. So what has that to do with, what are actually regulators looking at? We will just witness, because recent judgments which have been two very important judgments which I'll just take up sometime later, especially in October, and one very recent in December, is alarming. I'm not here to frighten you, but it's very, very alarming when you are into, as an advisory role, or you are working as an internal auditor, or when you are working as a consultant for even a very, very small trust or trust of a bigger scale, it hardly makes any difference. Look at the changes that's happening. This thing. Of course, as a part of disclaimer, this is purely my views. Please do not take it as any advice. We are, it's just that academically we will be looking at certain provisions. Yes, one had to do, because I still remember when I joined the practice in 1998, I check up the amendments happening, it's completely changed. There is a sea change happening. Especially the last 3 years, there's been a sea change. Like some provisions, I'm thankful to the chairman that he made me take up this subject, and I had to read it, I had to really read it. And thank you, because whether anyone else benefits, I benefited. So that's thanks from the bottom of my heart, Mr. Chairman, sir. And you feel at a comfort zone. Friends, so let us look at this topic academically. It's not that, of course, I've got 2-3 slides on GST also. It's not we'll be talking on income tax, but yes, there are GST, because that's equally important, that I've touched upon. Friends, I have picked up the topic in this fashion. Like, there are certain concepts that we will be discussing, and I picked a few concepts. In fact, there are many, and most of the concepts have evolved, or other challenges have been put forward over a period of time, especially last 3 years. Look at this one, anonymous donation. What is anonymous donation? It's like whether it is touching to whom. I say, first things first, it is touching to each and every trust. I'll put it like this, that any trust, be it a charitable and religious, we'll just segment. By the way, when we take up trust, of course, I'm going to take up public charitable and public religious trust. We won't be discussing about private trusts. So you pick up any trust, irrespective of size, there are going to be two things you have to be watchful about, where the assessing authorities are going to ponder upon or do deep diving into one very, very important aspect. It's this anonymous donation. Now, whether it is touching to whom, I say it's touching to all trusts who are registered under income tax. Let us look at one by one, and let's see, how things are going to be drastically changing, especially the technology factor being put in when you have everything to be digitized and put it in a digital format, and the income tax department has support from giant tech companies like TCS or L&T Infotech, doing data mining or data analytics for them and bringing out excellent results. Just click of a button and there you get the result. So any trust is applicable. Let's look at anonymous donations. When I'm picking up anonymous donation, friends, I have to pick up
two sections in my mind. One is 115 BBC, that's one, and section 68, that's another. So a trust can be hit either by 115 BBC or section 68. So there are two, hanging swords. So depending on which sword is in front of you, you have to defend. Because very, very recently, in one of my cases, of course, I don't happen to be the auditors, I'm just, we are into, of course, litigations, and I am, of course, fighting a case whereby there is a huge addition in case of a religious trust. Now, the AO was smart enough, he didn't pick up 115 BBC, he picked up 68. Now, big question mark whether actually 68 is applicable or not. We will discuss that also. Let's check up 115 BBC first. Look at the section here. It's 115 BBC 3. It defines anonymous donation as voluntary contribution referred to in section 224 2A, where person receiving such contribution, now this is very important, does not maintain a record of the identity. Just mark those words, we'll go step by step there. Indicating, so what is meant by identity? Its name and address of person making such contribution, and this is dangerous, such other particulars as may be prescribed. अभी तक कुछ prescribed नहीं हुआ है, right? But let us see. But one amendment that has happened that is indirectly touching upon here, that we'll just discuss from some time from now. What's the tax impact? Let's say if I'm hit by anonymous donation, let's say I don't produce the identity of donors, I don't keep the records of the donations received, or my records are insufficient, not catering to the requirements of AO, and he makes an addition, right? So, what is the tax impact? Look at this tax impact. The amount of anonymous donation exceeds higher of the following. Either it is 1 lakh or 5% of total donation received. Let's see, how do we calculate? Let's say my total donation is 10 lakhs. Alright, so 10 lakhs is my total donation, and 5% of is 50,000, or of course 1 lakh. Of course, let me just re-put it in front of you. My total donation is 10 lakh, out of which 50,000 is anonymous, proved anonymous. So what's the quantum of tax? You have to pick up like this: 10 lakhs, 5% of it is 50,000. You got 50,000, that's the limit there. So up to 50,000 he can't touch you, or 1 lakh, whichever is higher. So nil, you don't have to, you are not those. So you can take as a informal rule. किसी को कोई ट्रस्ट यदि आपको ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि सर ले लूँ, आप बोलो इतना ले लो, कोई बात नहीं. But once again you have to check up limits and everything. Now let's look at another example. Let's say it's going to be 10 lakh 75,000. Right? So 10 lakh 75,000, 10 lakh and 75,000 is my anonymous donation. So that 75,000, will be under tax net. So that's the taxability aspect. Now let's see which type of institutions are covered and not covered into this 115 BBC. Now when it comes to charitable institution, friends, we are aware that the income tax, the taxation laws gives you exemption either under section 11, the whole 11, or 1023C. Right? 1023C is a bigger section, of course 11 equally. Now 1023 is complete exemption. Let's just discuss each and every. In 1023, there are technically 8 sections, 8 subsections that you do see when you are picking up 1023C. Let's look at one by one. Who are the entities covered? Look at this, first one.
trust or institution, namely those covered under section 11. So if you are registered under 12A, right, and therefore you fall into this anonymous donation. Second is university or educational institution, only 3 AD and 6, namely those, limits and approvals. What are those that we just check up? Hospitals which are covered under 1023 AE and 6A. So funds or institution established for, now look at this item, this one. Funds or institution established for charitable purpose and notified by central government. Charitable and notified. So it's only those entities that are covered. Next, trust or institution. Now this is interesting and savior for many of the religious trusts, who are wholly for public religious and charitable purpose and notified by the government. Look, there are twin objects. Should be public religious and charitable both, and notified, you are covered. Else you are out. Now who are out? Let's look at this. You should be trust or institution created or established wholly for religious purposes. Now this is interesting. If you are wholly for religious purpose, in our mind, well, who are wholly for religious purposes, so one has to, just pick up the objects, see to it there are no mixed objects. See to the trust it there are no mixed objects. Like I happened just a couple of days back, a party came to me and said, we would like to go for ATG. I checked up all it was a pretty longer trust it, right, which had maximum number of pages which incorporated objects. So I read every object, and after my 10th object I see 11th onwards everything was religious. And I told him, hey buddy, you would like to go for ATG, then there are restrictions. He said, right, so you have to be very watchful, because now onwards all of you are aware that all your approvals or your recognitions are renewal based. Every 5 years there is something like detailed scrutiny of each and every document of yours. And now of course being digitized, every record is being digitized. One has to be watchful. You have to really tick whether it is charitable, religious, both. It allows you to tick, so one has to be really cautious. So if you are wholly for religious purposes, then of course you are out. You are trust or institution. I'll just, Trust or institution created, established wholly for religious and charitable purpose. However, if anonymous donation is received with a specific direction that it shall be any university or educational institution or hospital or medical institution, it shall be charged to tax as per the provisions. So entities, if you have some sort of charitable or medical or educational objectives, you have to be watchful that you don't get covered by 115 BBC. Especially now, of course, this section is being regulated indirectly, because now you have to furnish statement of donations, whereby you have to give details of each and every donation received. And mind well, there are no exemption limits, there are no basic limits that someone has given 100 rupees, 500 rupees, 1000 rupees, you don't have to report. You have to report each and every single rupee, right? Alright. Last but not the least, university or educational institution covered under 3AB and AC, that is wholly financed by government. Now what is wholly financed by government? Namely, when you receive grants, right, when you receive contribution, that is also defined, which is more than 50% of the total income, it is wholly financed by government. If you are handling such sort of institutions, you are out. So picking up a client, one has to check up the objects, one has to look up or not picking up the client, but when you are advising a client, you have to check up the objects, check up the quantum of donation they are received, in which category they fall, are they into, because now you can't sit on both
both the vehicles, like I am enjoying 10, 20, 30 C also, as well as 11. You have to pick up only one vehicle at a time. Alright, that brings me to another aspect, a very small segment, or in fact that time and again a question is being raised that what about those petty donations that you receive in donation boxes? Now there can be, let's say, an instance of Gaushala, or there can be instance of old age homes, where they just put a donation box where you need not give any identity, right? Who gives identity? No one. Let's you go to any hospitals, they put some donation box and then they write that this amount is going to be used for charitable or noble cause or medical cause or whatever it is. But there, of course, people put money. It can be 5 rupee, 10 rupee, 150, whatever it is. But their identity, let's say, and the box is open, there is no fixed periodicity. Of course, if a management is decided and there is something like Roj come that they do it, they put it everything in a diary and that entry is passed in the books of accounts, that's a different thing. Now, if you quantify the donation, like how many times the donation box is opened and the total credits in your books of accounts traveling, let's say the amount is sizable, right? Now, what can be sizable? Once again, no, like benchmarks given. So, what will be the scenario in anonymous? Will it fall into anonymous donation? Now, we have one small judgment, but of course, once again, it's with a rider here. One has to check up, one has to really check up your case. Do not blindly fit this judgment, but yes, you can apply the ratio there, right? Coming out with a plea. I'll tell you what is actually practical view. What was taken by Commissioner Income Tax who had visited CIT exemption, who had visited Rajkot somewhere on 17th June. I'll just discuss that part also. Let's look at the judgment and what it says. Of course, it's a Mumbai tribunal bench. It has not travelled, so it's settled there. It is Gurudev Siddharpit versus ITO, Ward 11 Kalyan, where in case of a religious or charitable trust, in the case of an SSC, as we have observed above, it is generally not only difficult but also not possible to maintain such type of record. A perusal of the entire section 115 BBC shows that the provision of the said section are not applicable to institutions like that of SSA Trust, as the same are meant to check the inflow of unaccounted or black money into the system, with a modus operandi to make out as a part of the accounts of the institution, like university medical institutions. Be that it may be, what one can do is just record it as box, like whatever box, whatever head you give. I link this with the assessment happening at Charity Commissioner's office, and you can take it as a clue there. See how things, because this just strike me. I was not prepared for this point, but when I was reading this, that I think I can share with you, and it comes as a clue to save you. How? It's like this. So those of you are aware about 9C, Form 9C, all of you, Form 9C, Statement of Contribution, Nauka, Gujarati ma, Audit Report, Bhavano, right? That's the Statement of Contribution, right? Nauka ni andar, when we put donation, it is exempt. But as a petty avak, it is not exempt by Charity Commissioner office, it is taxable. So advisable there is either pay 2% there at Charity Commissioner or 30% here. So what you do is assess, get it assessed. That our dan peti avak che, you please calculate 2% on it. Mu phalo bhari pan dais. Put it as a proof in front of Income Tax Department. Let him take a call that it is actually my petty avak and not my anonymous donation. Alright, so you can take this as a clue, take the support of the judgment, and you are bang on to it.
I think even I must try this because I have few clients there. Okay. It's just that it struck me, if anyone. Now let's look at section 68 vis-a-vis anonymous donation. Anonymous donation, I said 115 BBC, and you got section 68 is cash credit. Now, these are two weapons with the AO, the assessing authority. He can either raise 115 BBC, which he would not do it because 68 is more rigorous, more. Now, first things first, let's check up the section. Section क्या बोलता है पहले वो देख लेते हैं. Where any sum is found to be credited in the books of an SSE maintained for any previous year, 1, and the SSE offers no explanation about the nature and source thereof, or the explanation offered by him is not, in the opinion of AO, satisfactory. The sum so credited may be charged to income tax as the income the SSE of that previous year. सर जी मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है कि ये मेरी एनोनिमस डोनेशन नहीं है, ये मेरी एनोनिमस डोनेशन नहीं है, ये मेरी डोनेशन इनकम है. That I already told to you. So section 68, I have already credited, I have already assigned a head to my receipts. Right? So you can take a call and say that in this case, section 68, once again, there are challenges. I do understand, they would raise 2-3 more swords, but one has to be prepared. So you can take a plea that, sir, I already assigned a head, it is donation, these are the receipts. So forget about the identity, section 68 trigger ही नहीं होगा. Section 68 trigger ही नहीं होगा. Section 68 कभी trigger होगा कि मैंने कुछ credit की है, but I am not, it's not shown as an income, right? So I am not assigning it a head, right? So this is of course one view. Of course then there are court judgments taking care of it, but once again there is one more provision, very recent judgments, friends, that has changed everything. Let me tell you, and in fact I just incorporated those judgments this morning itself, because whatever we are looking at, the whole game has changed so far as charitable institutions are concerned. Okay, so whereas 68 SSE is required to prove nature and source of credit, under which identity and credit worthiness of the creditor and genuineness of credit is required to be established. But 115 BBC, SSE is required to maintain the name and address of donor only. So given a choice, go for 115 BBC. Generally नहीं होती है, right? But if he's taking you, if he's pushing you to 115 BBC, be pushed and try to defend there, right? Try to defend your case from that aspect. Friends, hold your breath, and the topic that now I'm going to take up is drastically changed the way in which charitable organizations, religious organizations across India have been functioning, and now what is expected, irrespective of the quantum of income you have, irrespective of your size of operations, irrespective of where you are registered, whether you are registered, that is all not material, friends. Welcome to one notification, right? But before we touch upon the notification, I'll take you to timelines and look at the anomaly there. First things first, I'll be a little bit critical. Well, so far as chartered accountants are concerned, we would love to see these words, because whenever there are words, we have some role to play. Client आवेनी हम के साथ चोपड़ा होता कहीं छे नहीं, so that's it. Our role is over, right? We don't, we are not actually supposed to do anything. You can't do anything. But the moment he says, we expect, then there are books of accounts, either it has to be maintained or you have to audit or whatever it is. Friends, I'll be critical here on that point. The manner in which this provision has been rushed upon, I would put it this way, I'll be very, very harsh on this point.
कि कितनी जल्दी जल्दी में ये प्रोविजन डाल दिया गया है. Look at the deadlines and what are the errors actually committed by the legislators. Right? What are the errors actually committed? Of course, since it's a closed group, I don't mind sharing those views anyways. But these are facts one need to be really aware about. That how sometimes certain provisions, it comes as a whale, it comes as a shark, you never know. And the moment you look at it, wow, you look at the magnitude of it. If you think કે તમને અહીંયા ડરાવું છું, yes, actually ડરાવું છું, કેમ કે આ ડરવા જેવી જ વાત છે. We check up the, so not frightening, but one has to be cautious, especially when you are advising even the smallest of the small charitable organization or the large organizations. With utmost humbleness, our institute is also the charitable organizations. Friends, I'll take you to the deadlines, right? I'll take you to the timeline, not the deadlines, but timeline. Dates के ऊपर focus करना. This is 10th proviso into section 23C, 1023C. Similar provision, identical provision has been incorporated into section 11. So fine, okay, they say maintenance of books of accounts, alright, no problem. लेकिन कब से? जरा dates के ऊपर नजर डालना. इधर लिखा है with effect from 1/4/23. So you say, Mr. Thakkar, why are you barking so much? 1/4/23 देखेंगे, right? चलो देखें. ये सेक्शन 12A1B में एक्चुअली 12A1B ऑडिट के लिए है. इसमें एक ही था, इसमें भी दो पार्ट कर लिया है. पहला पार्ट उसमें डाल दिया अकाउंट्स का. तो 1023C एंड 12AB, राइट, दोनों में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की. ठीक है, क्या बात की वो हम बाद में बात करेंगे. पहले डेट्स के ऊपर फोकस करो. उधर लिखा है 1st April 23. Okay. Now these provisions have been inserted while the finance bill, then of course Act 2022. अभी dates देखना जरा. Finance bill 2022 was presented in Parliament on 1st February 22. ठीक है? Done. Okay. Finance Act received the assent of Honorable President on 30th March 22. Books of accounts as may be, इधर लिखा है कि in section so and so 1st April 23. नीचे लिखा है books of accounts, वो सब रखने का. देखो highlighted है as may be prescribed. So you are waiting for some notification? Yes. And notification came also. चलो. लेकिन इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं. Rationalization, you know, they give justification for everything. And we barely read it. You know, they give justification for whatever things are. Of course, with utmost humbleness, regulators, is the role of regulators to see to it things go in place. But it should go in place, and you should make people at least digest the concept. And no provision should be put at, you know, at a such a rush or speed. Income of any fund or institution or trust or any university or other educational institution, hospital, वगैरह, any trust institution, 1212AB, exempt from tax. So under rationalization provision, उन्होंने ये वाला क्लोज डाला. There is a specific provision providing, however, there is no specific provision under the Act providing for the books of accounts to be maintained by such trust or institution. In order to ensure proper implementation of both the exemption regime, namely 23C and 11, it is proposed to amend clause so and so
राइट. सो ये उन्होंने बताया है. नाउ लुक एट द टाइमलाइंस वंस अगेन. These amendments will take effect from 1/4/23 and will accordingly apply for assessment year 23-24 and subsequent years. 30th March 22 your bill becomes an act. तब तक खाली provision है. What books of accounts you don't know. It's not only books of accounts, there are so many other things. ठीक है, पास हो गया बिल, आपका एक्ट बन गया, सबने पढ़ लिया. उधर आपने लिखा है कि एज में बी प्रिस्क्राइब. सो यू आर वेटिंग फॉर सम नोटिफिकेशन. इट केम. लेट अस चेक द डेट्स. ये रहा आपका नोटिफिकेशन. प्लीज चेक द डेट्स. इसमें लिखा है नोटिफिकेशन डेटेड 10th अगस्त 2022. Your financial year is already started. It's close to 5.5 months are over, and you see notification. Had it been 2-3 lines notification, sir, madam, I would be more than happy. Now hold your breath and first look at the length of the notification and what are the books and the other documents which are mandatorily required to be maintained by all. Let us check up. Books of accounts and other documents. उन्होंने डाल दिया एक 17 AA rules, 17 AA newly introduced from 1/4/22 onwards. Friends, this is the glimpse of that I have just This is a glimpse of only the section and subsection traveling. कितनी चीजें उन्होंने प्रिस्क्राइब की है. If you count cardinally, the number runs up to 53 items that you need to be cautious about. Mind well, it applies to everyone. Now we are going to hold your breath. We are going to pick up each and every item. Don't worry. We won't read word by word. तो ये दो घंटा क्या? It will take a lot of time. Anyways, so 53 items. If you check up, if you pick up each and everything, you have to be cautious about 53 books of accounts and other documents, which include sections, subsections, clause, वगैरह. Of course, just in a lighter note, I would put it like this. If you are just going to download this notification, please do not download as a Word file. The reason is even Microsoft Word has forgotten alignment. So you will always get confused कि 1 2 3 4 A 1 2 3 ये किधर आ गया? Because I've tried this using of course one other website. तो पीडीएफ में ही डाउनलोड करना, उधर से पिक अप अ फुट रोल एंड स्टार्ट रीडिंग इट. यू विल हैव टू एक्चुअली रीड इट, राइट. तो ये 53 चीज क्या है जो अगस्त से ऑलरेडी एप्लीकेबल है, राइट. इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April onwards, राइट. दे आल्सो टोल्ड कि यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते, देखो उन्होंने रखा किधर है वो सेक्शन, राइट. It is one of the condition for getting exemption. ये रखो तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा. Like they told, if you file your tax returns in time, you get deduction. Alright, if you don't file in time, you don't get deduction. Similarly, if you don't maintain this, you don't get a deduction. Simple, very simple. They was told, नीचे 3-4 चीज और है. योर स्टेट लेजिस्लेचर जो कुछ भी बोलता है, आपका बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू गुजरात, महाराष्ट्र या और कोई राज्य की स्टेट लेजिस्लेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कुछ भी बोले, उसको इग्नोर कर दो, या यू कैन मेंटेन सेपरेट सेट फॉर देम. हमको तो यही चाहिए. Alright, so let us look at. I have not dared to prepare a PPT on it. I have rather kept the PDF as it is. So मैंने उधर ही PDF रखी है. Let's just go to a link. I'll just catch up with the PDF and let's see what are there.
what are things, anyways, since it was. This is your notification number 94. I hope that has come. It's not come? Okay. How do I do this? Now let's look at this thing. Just to, okay, I'll just try to zoom up and hope things come up. Yeah, it's going to work. Fine. Okay. So friends, this notification, your notification, okay, your 17AA now travels into your statute book, namely your rules and the books of accounts that you need to keep. Just for your information, it is how many? 5 pages there. So it's a little bit the thing. I'll just read it for you. 5-page lengthy notification telling you what is to be maintained. Chalo, let us read one by one. Because it is given in parts. A, you see A, this one, and it has 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Those are very, very simple things. Any trust will be easily able to maintain it. You got cash book, you got ledger, you got a journal, you got copies of bills, whether machine numbered or otherwise serially numbered. Anyway, you need copies of bills. You got original bills wherever issued to person and receipts in respect of payments made. So you need a receipt. कैश के चेक वो बताया नहीं है, सबकी रिसीट आपको चाहिए. Any other book that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state of affairs of the person and explain the transactions affected. इतने तक ठीक है. All right, we would be able to. That's not an issue. उन्होंने वो भी बताया है कि बुक्स किधर रखने का. That is just coming. So with utmost humbleness, my dear accountant friends, आप जिधर भी हो, please go through this notification and have a look at it, because now such provisions are also applicable to charitable institutions. All right. Books of accounts as referred to A. So this your B and C. Once again, so we have seen A. That's pretty simple. B and C talks about, let's say you got some business. Let's say medical store है या कुछ और आप बिजनेस कर रहे हो, which is incidental to attainment of object, तो उसके लिए बात की है. कोई बात नहीं, वो था, वो ऑलरेडी था. People have been maintaining. There are no issues, no problem. बात आएगी वो डी पे. Have a look at the D part. Other documents for maintaining, and wish ये नोटिफिकेशन इधर ही खत्म हो जाता, लेकिन इधर से तो धमाका शुरू होता है. लेट्स सी क्या चीजें उन्होंने मांगी है. जस्ट स्क्रॉल डाउन. ऑलराइट, इधर से they are starting from 1. देखो 1 उधर से. I'll just read few words from there because it's a pretty long. एक तो record of all the projects and institutions run by the person containing details of name, address and objectives रखना पड़ेगा. Let's say you got schools, you got colleges, you got hospitals, you got multiples. You need to maintain the records उसके. दूसरा, record of income of the person during the previous year. वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर इफ अवेलेबल, आधार नंबर इफ अवेलेबल. तो ये रखना पड़ेगा आपको. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट रिफर टू अंडर सेक्शन 11 अलोंग विथ लिस्ट ऑफ सच प्रॉपर्टीज. यदि आपकी कोई रेंटल इनकम है वो भी रखो. इनकम ऑफ द फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी एज रिफर टू इन और एनी अदर इनकम. बेसिकली ये सबका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा. आप बोले ठीक है सर ये रिकॉर्ड तो हम रख रहे हैं, और क्या है.
तो record of following out of the income during the previous year, namely ऊपर जो इनकम है उसके संदर्भ में application of income in India containing details of amount of application, name and address of person to whom any credit or payment is made, and the object for which such application is made. मतलब रजिस्टर रखना पड़ेगा, because generally people shy in writing narrations when it comes to accounting entry. Exactly वही चीज की है. तो कोई ट्रस्ट वाला धड़ाधड़ रिसीट इश्यू कर रहा है, ये इनकम ले रहा है, बेटा आपको ये भी आपको एप्लीकेशन, because now friends what they are looking is you to match your income with expenditure. ये साल की इनकम में से कौन सा क्या एक्सपेंडिचर किया, एक्यूमुलेटेड इनकम में से कितना एक्सपेंडिचर किया. ऑप्शन हो, यदि आपने ऑप्शन ले रखा है 1 या 5 साल का, उसमें से कितना स्पेंडिंग किया, नेक्स्ट ईयर कितना कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हो. So every small items that you see in ITR 7 is now to be supported by documentary evidence. This is over and above your regular books of accounts, right? So we'll just take it up quickly. तो ये तीसरी वाली आइटम हमने आपको बता दी. थर्ड, अभी फोर्थ देख लेते हैं. ये सब सारी चीज है, ये सारी चीज है ना. इफ आई स्टार्ट रीडिंग एवरीथिंग, एप्लीकेशन दिखाना पड़ेगा, अमाउंट क्रेडिटेड दिखाना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया यदि है तो डीम में एप्लीकेशन ऑफ इनकम. कई बार क्या होता है कि सर आपने मेरे को माय 85% इज नॉट स्पेंड, आई एम कैरिंग इट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर. तो आपको लिख के रखना पड़ेगा कि मेरी इनकम इतनी है, लेट अस से, और उसमें रीजन भी देना पड़ेगा कि आप क्यों नेक्स्ट ईयर में स्पेंडिंग कर रहे हो. There will be 2 reasons. One, I have not received the income, namely accrue हुआ, FD का इंटरेस्ट accrue हुआ, मेरे को मिला नहीं. दूसरा, I have received but not able to spend. क्यों? Let's say 31st मार्च को मेरे को बैंक वाला ने इंटरेस्ट दिया, I am not able to spend it, and therefore I am carrying it forward. ये रीजन है आपको, you to maintain the records. अब तक नहीं था. You could just write away and get away with it. Now whatever you are writing, it should be supported by documentary evidence, right? Okay, चलो एक और चीज आती है, deemed application, income accumulated or set apart as per provisions of section 2 third provision, namely आप यदि कोई प्रोजेक्ट में या किधर आप when you are accumulating income, right? So you have to keep the records. क्यों आप अच्छा मनी इन्वेस्टर डिपॉजिटेड इन फॉर्म्स, आपका इन्वेस्टमेंट रजिस्टर रखना पड़ेगा कि सर मैंने मेरे एफडी में ये दिस अमाउंट हैज बीन आई हैव डिपॉजिटेड, या बैंक एफडी या म्यूचुअल फंड जिधर भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है. आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच आई फेस्ड ड्यूरिंग वन ऑफ आवर दिस असेसमेंट प्रोसीजर. यू रियली फेस दैट हीट. वन ऑफ आवर क्लाइंट, देयर accumulation quantum was 7 crore rupees. 7 crore का accumulation था, and that 7 crore we had invested in fixed deposit. वो फिक्स डिपॉजिट मतलब 5 साल हो गए थे, और इट वाज 15-16. उसके बाद आपकी वो असेसमेंट चली है. तो द एओ मेड बी, यू नो हाउ ही आस्क्ड मी दैट, पहले तो हमको दिखाओ कि वो साल में आपने 7 करोड़, व्हाट इज योर टोटल इनकम, आई सेड लेट्स से 10 करोड़, कितना स्पेंड किया, लेट्स से एक्स अमाउंट, व्हाट इज योर ऑप्शन, लेट्स से 7 करोड़. 7 करोड़ आपको कभी मिला, आई सेड ऑल राइट. जब भी 7 करोड़ मिला तभी आपने एफडी निकाली क्या पहले एफडी निकाली थी? कैन यू बिलीव दिस? इफ आई हैव टेकन माय एफडी फ्रॉम accumulated, लेट्स से आई हैव टेकन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन 1st अप्रैल, नॉट अलाउड. 1st अप्रैल को आपको 7 करोड़ कैसे मिल गई? आप पूरे साल आपने जो कुछ भी एक्टिविटी की उसमें से पैसा मिला, तो उसमें से आपको एफडी निकालने के ना, दिस इज समथिंग डेंजरस. क्योंकि क्या है, यू नो, लेट्स से इट्स लाइक दिस यार. लेट्स से कोई क्लाइंट ने आपको 10,000 रुपीज फीस दी, 500 की 20 नोट दे दी, और एक दूसरा क्लाइंट आया, उसने 10,000 दी, 2,000 की 5 नोट दी. अभी आप फ्यूल डलवाने गए 2,000 रुपए के, तो इट हार्डली मैटर्स इधर यू गिव देम पिंक नोट्स और दोस ग्रीन नोट्स, इट हार्डली मैटर्स. दैट इज नॉट अलाउड हियर.
you have to map, right? He provision this clearly. He made me map everything. Fortunately, I could get away with it. 2 बार मेरे को शो को नोटिस मिला, but ultimately, of course, जीत गए. Anyways, and without any hanky-panky business, let me tell you, without any hanky, all on merits, we could do it because everything was, you know, when we audit के time में जब भी, you know, because you charge to client for this only, right? तो and my client was also happy क्योंकि ये एक बड़ा assessment है, हमारे लिए challenging था. And it happened this last year, 2 years back. ही कुछ. Anyways, let's come to हमारा fourth item, record of following out of the income of the previous year preceding the current previous year. आपका ये साल का और उसके पहले के साल का भी इनकम में से जो आपने स्पेंड किया उसकी भी डिटेल रखनी पड़ेगी. ट्रस्ट में आप जानते हो कि 100 इनकम आई, 15 घर पे रख लो, 85 यूज कर लो. दैट्स अ थंब रूल. ऑल राइट. वो बोल रहे कि 15 स्पेंड किया कि नेक्स्ट ईयर की इनकम में से स्पेंड किया. जैसे ये साल में मैंने कुछ स्पेंड किया, ये साल मेरी फिर से 100 रुपए इनकम हुई और मैंने 85 स्पेंड किया. तो बोल रहे 85 ये साल की इनकम में से स्पेंड किया कि वो 15 एक्यूमुलेटेड में से स्पेंड किया. दिस इज गोइंग टू बी नास्टी. यू टू लिटरली मेंटेन, जैसे बोलते हैं ना, लाइन बाय लाइन डेटा ऑफ एवरीथिंग. इट इज, आई बिलीव, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. And you have to be very, very cautious. They'll make you do it. They'll really make you do it. It's my own experience. Because that time, you know, you have a really testing time. वो तो 2 लाइन में आपको लिख के देगा. Show cause, you know, why I should disallow this application of income, because this application of income is not from income derived during the year, but from your accumulated income of 15%, and therefore I disallow. उधर आप लग लेना. Right? So they can say anything. So things are going to be really nasty there. Anyway, application, others I will not touch upon the detailed aspect. ये इतनी सारी चीजें हैं. आगे, record of voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of corpus of the corpus. ये बड़ी मजेदार चीज है. Now here comes once again. Generally what happens, हमको देने closed. सर कितनी आवत है? 10 लाख. कितना हुआ आपका? साहब 6 लाख. Done. કેટલા વાપરવાના? 8.5 લાખ. કેટલા પેલા થયા? તો કે 2.5 લાખ. સાહેબ એક કામ કરો, જનરલ ડોનેશન ના કોર્પસમાં ઓલરેડી પાડી દો. અકાઉન્ટન્ટ નું ડોટ સાહેબ આ કામ નાખો. એમ નો ચાલે. Because your year is over, your statement of donation is gone, and now look, you have to maintain this. पहले नहीं था. Only a letter from donor was required कि सर वो तो you can take it always, you can go back and tell to donor कि बेटा तू दे दे. राइट कि भाई तूने मेरे को कॉर्पस नहीं दे, तूने तो डोनेशन दी दे, तो कॉर्पस दे या नॉन कॉर्पस दे, क्या फर्क पड़ता है तेरे को? तो वैसे भी 80 मिलने वाला है. डोनर इज कंसर्न ओनली अबाउट 80, व्हाट एल्स? राइट. नाउ यू टू बी watchful here. This detailed records you have to maintain. Contribution received during the previous year containing details on name, address, blah blah. Application out of such voluntary contribution received in this thing. इसमें से यदि आपने कोई स्पेंड किया है तो amount credited or paid towards corpus to any fund on. Now this is interesting. ट्रस्ट में किया होता है, मजेदार चीज होती है. There is a A trust, there is a B trust. सर A trust में पैसा आया, ठीक है. सर पैसा स्पेंड नहीं किया, डाल दो B trust में. Give to another trust, right? तो वो भी डिटेल आपको रखनी पड़ेगी. इधर भी 2 कैच है. There are 2 riders. Of course you cannot give as a corpus donation to another trust. ये तो कुछ नहीं होगा. गवर्नमेंट, you know, government is very very harsh on this aspect, or very very strict on this aspect. Not very harsh is not the correct word, but strict on this aspect, like it's transferring from one pocket to another, right? So you can't give it. You can give it as a corporate donation, but लेकिन आपको deduction नहीं मिलेगा. That's the only thing, right? तो उसका कोई फायदा नहीं है. Now you have to maintain the records कि कितने, because charity can happen in 2 ways. एक, आप direct charity करो. देखो से आपकी हॉस्पिटल है, आपकी स्कूल है, आपकी गौशाला है, फला फला, ठीक है, उधर आप स्पेंड करो, ठीक है. दैट मीन्स एक्चुअल एक्टिविटी इज हैपनिंग एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग. दूसरी, आप कोई और इंस्टीट्यूट को दे दो, क्योंकि इन ट्रस्ट विल बी ऑलवेज राइट કે શૈક્ષણિક અંગેનું આ ફલાણું કામ કરશો અને આવી કામ કરતી સંસ્થાઓને મદદ કરશો, right? So it can be either way. So you can do direct charity
और डायरेक्ट आपसे नहीं होती तो कोई अच्छी वाली संस्था को एक भाई फला संस्था अच्छी है चलो उसको दे दो पैसा, Right? So people do it this way. so now you have to maintain the records कि भाई उसको आपने कितने ना how many this thing, देखो this was never, तब आप इन ऑडिट रिपोर्ट आप क्या लिखोगे, एप्लीकेशन अमाउंट स्पेंड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, एजुकेशन में डाल दो पूरा, राइट, एजुकेशन आपने खुद की स्कूल चले ये उसका पैसा है कि किसी कोई और एजुकेशन जो आपकी सिस्टर को कंसर्न या सम एसोसिएटेड ट्रस्ट है, ऐसे ही कुछ एक ट्रस्ट में है, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अप दैट दिस थिंग। एंड फ्रेंड्स आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये जितनी जितनी चीजें हैं दिस विल ट्रैवल एज अ पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न, और आगे जाके वो बोल दे कि इसको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड करवा के लाओ, right? So these are, because one hint I can give you, I was just referring about the visit of Commissioner Income Tax Exemption here in June 17 या 18 June, and उधर भी एनोनिमस डोनेशन की बात निकली थी कि सर छोटे छोटे डोनेशन देते हैं, इवन आई पर्सनली टोल्ड कि सर मेरे घर मॉर्निंग पे कोई व्हेन आई एम जस्ट टेकिंग तैयार होता हूँ तभी एक रिक्शा वाला की आवाज़ सुनाई देती है, वो ऑटो रिक्शा वाला तो अनाउंस करता है कि बहुत सारा गौ सेवा हमें ये दे दो, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। आई ऑलवेज हियर दैट सॉन्ग, वो लोग तो देते भी है, अच्छा है कि चलो गौ सेवा में वगैरह छोटी छोटी मोटी रकम दे दी, तो सर उसका वो 5,000 चाहिए, वो बोलेगा सबका चाहिए, देयर इज नो एग्जम्पशन, दीज आर हिज वर्ड, तो सर नहीं मिला तो बी रेडी टू पे 30%, 30% આપી દો સિમ્પલ, અમે કઈ નહીં પૂછે, નો લિટિગેશન। એટલે હવે તમારે when you are taking donation tell to client કે 70 તારા 30 સરકારના, કાઈ 5,000 જરૂર નથી। And mind well, friends, I am telling you this in a lighter tone, but seriously, when really client tells you કે સર કઈ રસ્તો નિકાળો, I am sorry, there are no ways out. because now Every rupee you have to digitize and put it in your that form 10BD. Say 10BD છે ને, 10BD form, where your total donation will be compared with your income tax return donation will be in mismatching। ये तो पैसा पहला साल था, अभी 21-22 FY, आगे जाके they will use, they can आराम से उसको मिल जाएगी कितना डोनेशन है, they will link with your bank account, उधर भी पता चल जाएगा कि कैश में कितनी है, चेक से कितनी है, और जर्नल एंट्री से कितनी है। अभी उसके लिए भी they have come out with a horrible provision, I would put it this way, horrible, I am sorry to use this thing। Anyways, let's come up, ये सारी चीज है, ऑफ कोर्स आप पढ़ सकते हो, जस्ट फॉर paucity of time I am not taking up। record of contribution reserve the purpose of renovation repairs of temple, ये स्पेशल प्रोविजन है उन्होंने डाला है, तो उनके लिए है कि जिसको नोटिफाइड आप टेंपल वगैरह created of course in for these big temples, उसको ATG they are giving it for obvious reasons, will not enter into the political aspect of it। so ये सारी चीजें रखो। record of loans and borrowings, वाह इतनी रजिस्टर तो शायद कंपनीज एक्ट में नहीं रहेगी, जितनी इधर उन्होंने लगा दी है, एवरीथिंग यू टू मेंटेन। वंस अगेन नो लिमिट, 10,000 रुपये में ट्रस्टी लोन नाखी हो तो इन्होंने रिकॉर्ड रखो, यू टू कीप द रिकॉर्ड्स, राइट। तो रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय द एसएससी विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलग, मूवेबल का अलग है। 10वां है रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस, ये बड़ा खतरनाक है। 13(3) में रिलेटेड पार्टी, हमारा 48 रुपये वाला है, यू टू कीप अ रिकॉर्ड, ये ट्रस्टी है, ये इसका सगे वाला है, इसको दिया है, इसको रेंट दिया है, यू टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, ऑल द रिलेटेड पार्टीज, राइट। ऐसा नहीं है कि रीजनेबल रेंट दिया है तो उसका रिकॉर्ड मत रखो, नो, यू टू मेंटेन दैट रिकॉर्ड। दीज रिकॉर्ड दे विल कंपेयर विद व्हाट यू सर्टिफाई इन 10B में आपको लिख के देना पड़ता है उधर, राइट, ओके। अच्छा, so that ends, लास्ट ये रही न जाए એમાં એમ લખ્યું છે કે any other documents containing any other relevant information, ये तो जी राખ્યું જ છે, right। अच्छा, और now of course don't worry, we are just our notification is just about to get over।
Second, the books of accounts and other documents specified in subsection sub-rule 1 may be kept in written form or in electronic form or in digital form or as printout of data stored in electronic form, in a digital form, any other form of electronically data storage devices. That is a welcome thing, right? कि भाई चलो ठीक है, you allow digital addressing. State regulators do not allow this. They want you to keep physical records. તો એવું નહીં સાહેબ કેશ બુક ની પ્રિન્ટ લઈ લો, લેજર આપણે પછી જોઈ લેશું, ટેલીમાં બેકઅપ या અમેરિકામાં બેકઅપ રાખશું. No, state regulators want everything print out. All right, but this overrides, I believe, everything. So you have to be watchful. तीसरा वाला, the books of accounts and other documents specified in rule shall be kept and maintained by one institution, trust, university, or other medical at its registered office. No option, registered office. Accountant नहीं, chartered accountant नहीं, trustee नहीं, registered office. वो पान डेटाबेस में देखेंगे कि सर आपका पान डेटाबेस में हमारा नंबर तो मतलब एड्रेस तो ये लिखा है, ये आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस मानी जाएगी, तो पान नंबर अपडेट करवा लेना, राइट? क्योंकि ऑनलाइन में पड़ा है उसके पास, राइट? सो ओके, प्रोवाइडेड दैट, हाँ इसमें एक प्रोविजन डाला है कि ऑल बुक्स, एनी ऑफ द बुक्स एज मैनेजमेंट other documents reported may be kept at such other place in India. आपको ऑप्शन दिया जाता है as a management may decide by a resolution. એટલું જ નહીં, તમે resolution કરીને રાખી નહીં દેવાનું, but you have to do something else. And where such a resolution is passed, the fund or institution, trust, university वगैरह वगैरह shall, देखो इधर से पढ़ो, shall within 7 days thereof intimate the jurisdictional AO in writing, giving the address. सबको देना पड़ेगा. I will not be surprised. They would put it digitized. कि online में upload कर दियो तुम्हें. Right? Within 7 days. Resolution की date जो move जो, हाँ, you have to be very cautious. Right? नहीं तो इधर से कुछ भी डाल देंगे. The books of account. Now here comes. The books of accounts and other documents specified in sub-rule 1 shall be kept and maintained for a period of 10 years from the end of the relevant assessment years. 6 साल वैसे इनकम टैक्स में बोले वो भूल जाओ, ये तो 10 साल. Provided that where the assessment is this thing, the books of accounts and यदि assessment proceeding चल रही है तो then of course till your assessment proceedings are fine. तो ये आपको ध्यान में रखने का. So this brings an end to your books of accounts part, and let me once again plunge into this because this was a PDF thing and okay, चलो फटाफट एक बार और आएगा ऐसा. So this is all about books of accounts and something. Of course, it's no intention to frighten you or something. What needs to be. The point here is now whatever things are happening in a charitable institutions, you know, something we have always been using a word called professionalism, right? But when it comes to maintenance of books of accounts, dealing with chartered accountants, taking advice from chartered accountants, it's taken for a ride. You know, client just tells you, calls you up, said like WhatsApp કર્યો છે. આમાં આપણે શું કરવાનું? Please do not, you know, entertain these queries under any circumstances to any clients. Like the other day we were at a conference, you know, madam told that I don't open my mouth, or one of the speaker, and when I open, I charge for it. Right? So what there is something called professional. Look at the level of compliance that is expected. Ultimately, client क्या बोलेगा? सर ये तो बुद्धि तुम्हारा करवाना है ना. So make client aware कि सर जी कुछ मत करो, खाली ये नोटिफिकेशन की कॉपी अपने खुद के पोस्टेज खर्च से उसको भेज दो भैया ये रखने का, ताकि वो ना बोले कि सर ये तो साल खत्म हो गया अभी बोल रहे हो. तो बोलो सर कि अगस्त में जो नोटिफिकेशन आया, बाद में तो दिवाली पटाखा धमाका हुआ, अभी देखो ये बड़ा धमाका. Right? So you will be very very cautious when dealing with clients. All right. Here comes a bigger shock or bigger blow, not a shock. Lifting of corporate wealth. Okay, lifting of corporate wealth. Now friends, we are aware about this terminology,
and its importance, corporate veil. Now, friends, it dates back to 1898, when, and then subsequently, this terminology, we'll not go into the history part of it, but we have learned also, we have experienced it. What is it, corporate veil? It's like the shield, right, given to protect, right, the identity, right, that whenever there is a company, shareholders, they are distinct person, right, and its identity is to maintain. All those theoretical academic concepts we have learned or we have read, right, in intermediate or final years back anyways. It applied only and only to companies up till now. Oh, friends, welcome to one judgment, right, whereby everything has changed, and we are going to discuss about that. Lifting of corporate veil. देखो जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है, it has defined the doctrine of principle piercing of corporate veil. Now, what is piercing of corporate veil? The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors or shareholders for the corporation's wrongful act. ठीक है, चलो इससे हमें क्या लेना देना, आगे थोड़ा पढ़ते हैं. For trust, whether it was ever applicable, answer was no. Supreme Court ने एक, of course it was our Honorable Gujarat High Court judgment which traveled all the way to Supreme Court and way back in 1998 had held, क्या उन्होंने बताया था कि concept of lifting the veil was permissible only in the case of a company with a view to find out the real persons behind the corporate body. Thus, lifting or piercing of veil was an exercise which was not permissible in the field of law of trust. All right, तो trust वाले आप में lifting of corporate veil कभी नहीं होगा, आप कुछ भी कर सकते हो. उधर से आज तक कुछ नहीं था. Everything was nice and fine till this judgment, very recent one. Mac Public Charitable Trust, your Madras High Court. Look at this. SSC Charitable Trust registered on the 12th, okay. Here they have filed nil return, okay. What AO did during assessment proceedings, उन्होंने analyze किया. What did he analyze? Very interesting the manner, and then normally, if of course, if we just try to, ऐसा नहीं कि वो it happens only in metro city. If we try to relate anywhere, let's be very honest, people do it. कैसे? Let's say there is a college जिसको मेरे को admission चाहिए. College is a very reputed one. Everything, every hype is there with the college. Now I wanted admission. I go to the trust board without my result because it's not worth showing. And then, of course, like everything sells, so are the seats. They will tell you that हमारा एक और ट्रस्ट है, आप उसमें इतना डोनेशन दे दो, आपकी सीट इधर रिजर्व हो जाएगी. And you are most welcome to our prestigious college. This is the normal modus operandi. And ऐसी चीज assessing officer ने पूरी डिटेल में. Now when I'm assessing trust A, do I need to see cycle कि आपको पैसा आ रहा है, आपको तो बड़ी डोनेशन आ रही है, वेरी गुड. डोनेशन किधर से आ रही है कि आपके दूसरे ट्रस्ट में से आ रही है, वेरी गुड. उसमें पैसा किधर से आ रहा है, आप ही की ट्रस्ट की कॉलेज के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के द्वारा इधर डोनेशन डाला गया है. ये चक्कर पूरा घुमाया था. नॉर्मल थिंग, इसमें कोई बहुत स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें हुई थी. एसेसिंग ऑफिसर ने पूरी स्क्रूटिनी करके ऑब्जर्वेशन निकाला. नाउ जस्ट लेट अस से स्टूडेंट के पेरेंट्स ने पैसा डाला है, तो व्हाट्स रॉन्ग देयर? इट्स अ डोनेशन. Actually, it was capitation fees. Capitation fees, yeah.
which is strictly against your constitution. In the guise of this, जैसे हम करते हैं कि सर આ અમારી વાડી છે, આ અમારો પાર્ટી પ્લોટ છે, એમાં અમે વાડી ભાડું લઈએ છે, પછી વાસણ ભાડું, તો કીધું ભેટની પહોંચ ફાડી દઈ છે. Right? So the guise of so GST department क्या करेगा? अभी very recently happened in my client case. मैंने कहा साहब जो आके 3 लाख નો ટર્નઓવર છે, બટ ડોનેશન તો કે ઈ જ વાડી વાળા જેણે વાડી બુક કરાવી હોય 3 લાખ નું ડોનેશન છે અને 25 લાખ નું તમને ડોનેશન આવ્યું, 3 લાખ નું વાડી ભાડું છે, 25 લાખ નું ડોનેશન આવ્યું. બોલો જીએસટી માં તમે એપ્લાય થાવ કે નહીં, મને એપ્લિકેબલ થાય કે નહીં? We are going to discuss that. So piercing the corporate veil, now applicable interest also. This is an alarming. और इधर तो कोर्ट कितनी हद तक गई है, I will tell you. The court's observation, like कितना खुन्नस होगा उस जज का, right? वो उसकी एक एक लाइन में देखना कितनी हद तक, वो खाली 1 साल के लिए नहीं छोड़ा, पूरा ट्रस्ट का वो कर दिया. It's a big trust, वो 4-5 करोड़ की that amount in a year was there. बाद में एक्चुअली इसमें डोनेशन आ रहा था, तो चलिए क्या होता है, ट्रस्ट में डोनेशन है तो अच्छी बात है सर, सब कुछ चेक से आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है. भैया आ किधर से रहा है सर? सब कुछ तो चेक से आ रहा है सर. वो जो दे रहे हैं एक और ट्रस्ट दे रहा है. अरे वाह, वो ट्रस्ट को कौन दे रहा है सर? वो तो वॉलंटियर, सबको अच्छा लगता है. अरे कोई મફત માં તો કોઈને ઝાપટી નથી આપતું, તો ડોનેશન આવડું મોટું કેવી રીતે આપે? Right? So this is piercing corporate veil. We are going to now look at what was the observation. It is clear that there is no bar to apply the doctrine in case of trust. ये काफी लंबा जजमेंट है, लेकिन इस वक्त you can download it and have a look at क्या observation की है. ये लैंडमार्क जजमेंट में गए हैं. If you check 2022 के जजमेंट्स में, this is a landmark judgment ट्रस्ट के लिए. 2 और आ रहे हैं. Right? We are going to discuss about that. अच्छा, बाकी की बातें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इधर देखो कोर्ट ने क्या क्या चीजें निकाली उसमें से. इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द प्रेजेंट अपील्स फाइल्ड बाय द रेवेन्यू आर अलाउड, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, देखना. The assessing authority shall proceed further on the basis of the order of the assessment of tax which are subject matter of these appeals. A. The assessing authority shall also proceed further for cancellation of registration certificate issued the SSG trust under 12A, thereby not to treat the respondents as charitable institution any longer. Sir, मेरा ट्रस्ट का कैंसिल करने का है तो 2 चीज चाहिए, राइट? कि भैया मेरी एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, राइट? आई एम नॉट अबाइडिंग टू द ऑब्जेक्ट्स. तो ही आप मेरा, ये तो आई एम एजुकेशन का काम कर रहा हूँ. व्हाट हैज दैट टू डू विद ऑब्जेक्ट्स? Lifting of corporate veil, your 12A is gone. कल आपकी करोड़ की इनकम एग्जाम थी, आज आप एओपी हो, प्लीज पे 30% टैक्स ऑन योर ग्रॉस रिसीट्स, नो डिडक्शन अलाउड. देखो लास्ट में क्या लिखा है, देखो खुन्नस कितनी निकाली. एओ shall also proceed to reopen the previous assessment. कि पाछड़ नहीं खोल जो. राइट? तो if you read this judgment, it's very, very interesting. Anyways, so this is all about, you can, this is your corporate veil, MAC Public Charitable Trust. And friends, mind well, I will not be surprised कि 23 या 24 के बजट में यही चीज एक्ट में घुसा के वो दे दे कि सर AO has all right to lift corporate veil. ये हो, क्योंकि आप see, cancellation of registration by any trust is something that the last recourse, because you are taking the entire this thing sting out of it. They are enjoying complete tax exemption. एक भी रुपया टैक्स नहीं भर रहा है. पूरी आप उसकी you are denying उसकी जो benefits है पूरी आप deny कर रहे हो. And taking a registration is something very very strict. तो अभी इसमें आपको freedom दे रही है कोर्ट. अभी ये जजमेंट पकड़ के, right? Any assessing authority can approach to, you know, देखो जो judgment, of course it's जैसा हमने, you know, it's an वो तो एक all of us know कि जब भी कोई judgment authority के फेवर में आता है तो क्या होता है, ये वो आपको वही दिखाएगा जो आना है आमकी तो, हाँ आना है आमकी तो फलाना है.
ચેન્નઈ હાઈકોર્ટ, આ બાકી આપણે સુપ્રીમ કોર્ટનો જજમેન્ટ દેખાડે તો કે નહીં ભાઈ સુપ્રીમ કોર્ટ જજમેન્ટ નોટ એપ્લિકેબલ, આપણે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો જજમેન્ટ બધે નો ઇટ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ. આવું ક્યાંક કામ, so one has to be very very watchful. આટલું ઓછું હતું. There is one more thing coming up in a trust. Application of income on payment basis. Has it something to do with books of accounts that I maintain? Has it something to do with my accounting system that I need to follow? Well, answer is both ways, yes and no. Now let's look at it how. देखो, उन्होंने, and of course applicable from 1/4/22 on, don't worry, लागू पड़ी गयू है. Explanation 3 to section 1023C SI 11 में डाल दिया है. SI 11 में डाल दिया है. Explanation to section 11 inserted by Finance Act 2022 applicable from 1/4/22. क्या लिखा है? दोनों में एक ही टर्मिनोलॉजी है, so I not this thing. For the purpose of this clause, any sum payable by any fund, trust, institution वगैरह वगैरह shall be considered as application of income during the previous year in which some such sum is actually paid. मतलब आपका जो खर्चा है, जो आप allow, let's say you got 100 income, you are spending 85 તમારો કેશ ફ્લો બનાવે, એમાં 85 આઉટફ્લોમાં દેખાવા જોઈએ. So times are not far when they will make you prepare cash flow statements. Be ready, right? Because your application of income is going to be allowed only on now payment basis. Every time of you got a client, every time his accountant is very smart. I have high respect for accountants. You know the creativity which they have, the manner in which they keep things in front of you. उसको पता है कि लास्ट डे आज है या कल है, तो सुबह ही आएगा कि सब रिटर्न फाइल करने का, ऑडिट करने का, whatever you tell. He is managing 3 trusts, strong trusts है. एक में ATG है, एक में ATG नहीं है. Forget about the third one, is a smaller one. एक જેમાં ATG છે એમાં ઇન્કમ વધારે જોઈએ obviously. ATG નથી એમાં ઇન્કમ is this thing. And he writes his books of accounts on, let's say 30th September या 7th October last date की 5वीं तारीखे तो हम चोपड़ा लखवा बेचते हैं. Right? Everything is normal, जैसे सबका होता है वैसे ही उनका है. He will not see application of income because that's not his domain. એટલે આ બધું ઠક્કર સાહેબ જોઈ લે છે. Every time what he does is income આવી હોય એના કરતા spending જે ATG ટ્રસ્ટ છે એમાં ઓછું હોય, અને એને ખબર હોય કે ઠક્કર સાહેબ દર વખતે કે સાહેબ આટલો ખર્ચો ઓછો છે, મારે કાંઈ નહીં કરવાનું, ખર્ચ ખાતે ઉધારી દેવાનું ATG માં, અને જે બીજું ટ્રસ્ટ છે એમાં પોતપોત ખાતે જમા કરી દેવાની. આ જ્યારથી પ્રોવિઝન આવ્યું ને મને હાઈસ થયું કે મારું પ્લાનિંગ તો બચી ગયું, આની માટે ટેન્શન તો બચી ગયું. મારે ને આ બધા બેટા હવે પેમેન્ટ બેઝ, તારે 31 માર્ચ પહેલા જે કરવું હોય ને કરી આવજે. 31 માર્ચ પછી મારો કોઈ રોલ આવતો જ નથી. You don't tell me to pass journal entries. This has nothing to do with books of accounts. They don't say you maintain books of accounts on cash basis. No. Section 145. It allows you freedom. Cash mercantile जो भी करने का, but when you are preparing your computation, application of income में दिखाओ कि पेमेंट हुआ है. आपकी कैश बुक हम देखेंगे, आपकी बैंक बुक हम देखेंगे, उसमें पेमेंट साइन हम जरूर देखेंगे. Right? So one has to be really cautious when नहीं, you will not get the spending. नहीं तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा. अब कोई छोटा मोटा ट्रस्ट है, इट्स वेरी इजी टू ट्रैक. ATG वाला ट्रस्ट है, अभी तो ऑल बैंक अकाउंट्स आर लिंक, आप में कैश कितनी है वो भी लिंक है, तो
I will not be surprised if income tax department prepares fund flow for you, give it to you. बेटा तेरी fund flow ये है, right? Because using technology, it's very easy to come up with things. Especially when you have there are only 4. We have seen how many do cloud accounting using cloud accounting softwares. तो कुछ accounting entry पास ही नहीं करने की है. When they use artificial intelligence, धड़ा automatically do just ऐसे ही लिंक कर दो, आपका background धड़ा accounting हो जाता है. ये तो एक accounting की बात ही है. Dealing with data उधर ही कर लेंगे आपको. Right? So it's very easy. ओके, चलो इधर देख लो, ये इधर लिखा है. हाँ, जस्टिफिकेशन, उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दिया है. हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग. ये मेरे को बड़ा ये प्रोविजन आया तो मतलब क्या सोच के उन्होंने ये प्रोविजन डाला. मेरे को आई ऑलवेज लव दिस पार्ट, क्या उन्होंने सोचा, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस प्रोविजन, राइट. ये तो ऑलमोस्ट समझ है सब कोर्स की someone had thought, उधर किसी ने कुछ सोचा है, उसके माइंड में आया, उधर उन्होंने डाल दिया और कायदे में आ गया. जरूरी नहीं है कि देयर इज पब्लिक इन्वॉल्वमेंट देयर. हमारा और आपका रिप्रेजेंटेशन अब लिख के हम कितना भी भेजो वो करेंगे तो वो लुक व्हाट लॉजिक दे आर गिविंग. ये उसके मेमोरेंडम में लिखा है. Clarification that application will be allowed only when actually paid. लिखा है उधर कि ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन under both the regimes, namely आपका 23C और 11, it apply 85% of their income for the purpose specified. देखो अभी की लाइन बड़ी मजेदार है. As is evident from the word application, it means actually paid. बस ये लगा के आपको दे दिया कि भैया एप्लीकेशन मतलब पेमेंट. वो कितने लिखा है, यानी कोर्ट में भी बता दिए, ये सब बता दिए, तो आपको मान लेने का. दिस इज हाउ आई एम सॉरी टू से सर्टन sections of legislations are literally bombarded upon us, or since we know these things, right, and the worst part is your clients are not aware about it, and the stakeholders are not aware about it, right. So onus of course is on both of us. कई बार बोलते हैं कि सर तुम्हारे झूल लागे बोले तो client माय it takes at least some level of understanding to client को जरूरी है. You do explain these things. हाँ, these amendments will effect from 1st April 22 and will accordingly apply to us. ये तो बड़ी मजेदार चीज है. 22-23 से है. AY 22-23 मतलब 21-22 का आपका रिटर्न गया, ऑलरेडी गया. એમાં પેલો અવળો પણ હોયો ગયો. वो બધું everything is ભગવાન ભરોસે. Right? So one has to be cautious and subsequent assessment years. अच्छा, anyways, ज़्यादा बड़े heavy dose हो गए. अभी थोड़े smaller provisions, condonation of delay, 119(2)(b. इसमें of course जानते हैं of course 4 फॉर्म्स की बात की है. आपका फॉर्म 10, आपका 9A, 10, 10B and 10BB. 4 important forms when it comes to auditing of trust वगैरह वगैरह. इसमें what they have done is कि now even since it's digitized, देखो उन्होंने कर क्या दिया है कि भाई आपको ड्यू डेट से पहले वो अपलोड कर देने का. Now all of us are aware कि चीजें कैसे अपलोड होती है, right? तो उसमें we will not go. और उसमें everything is to be certified या digitally signed या you go into this login, chartered accountant के login में जाके approve करो. And then since it's a digitized environment, ये चीजें जरूरी है कि क्लाइंट के चार्टर्ड अकाउंटेंट के लॉगिन में से अपलोड करो, क्लाइंट के लॉगिन में से अप्रूव करो. those things are required. अभी अपलोड कर दिया, अप्रूव छूट गया. in one of my cases happened कि यार अपलोड कर दिया, अप्रूव करना छूट गया, रिटर्न फाइल हो गया, एडिशन होके आ गया. बाद में 2 लाइन लिख के दे दी कि सर ये टेक्निकल मिस्टेक है इसमें. क्यों? मतलब टू द सीपीसी अप्रूव करके वो 150 वोट डाल दिया. थैंकफुली उन्होंने अलाउ कर दिया, राइट. सो एनीवे, condonation of delay. But I have still reservations here.
उधर पढ़ो, देखो इधर क्या चीजें होती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले आपका ये सर्कुलर निकाले उन्होंने। पहले क्या था कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम उन्होंने सर्कुलर निकाले थे 2-3, अभी उन्होंने सब साथ में कर दिया। सर्कुलर 15, 16, 17, 2022, 19 जुलाई 2022 में सब साथ में कर दिया कि कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 192B फॉर फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म्स आपका AY 18, 19 एंड सब्सिक्वेंट में एप्लीकेबल होगा। डिले अप टू 365 डेज अप टू 3 इयर्स, मतलब 1 साल से 3 साल के लिए आपका डिले है तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अन्यथा इट्स गोना बी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ प्रो नहीं है, PRI है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। नाउ फ्रेंड्स, आई विश दिस प्रोसीजर वाज आल्सो ऑनलाइन। Unfortunately, no. Very important provision. Just it happened in this thing, one of our clients' cases. उसका AY 21-22 का, just because the trustee and the accountant, दोनों को, of course, they were struck by this pandemic और they were hospitalized. वही टाइम पे जब ये रिटर्न फाइल करने का था, and there were genuine reasons, right? उसका कुछ they were quarantine and वगैरह, तो they could not get the audit in time, they could not get the audit completed in time, और उसका 10B, और उसमें we had an option of around 65 lakh rupees, तो सारी चीजें एडिशन हो गई, 65 समथिंग मोर, very बड़ी अमाउंट, everything got disallowed, आपकी टोटल इनकम 30%, so this is something really nasty। एक अच्छी बात है कि कमिश्नर को कुछ पावर्स दिए गए हैं, पर आई विश दोज पावर्स एक और चीज वो भी कर सकते हैं कि वाई, और कमिश्नर बताते हैं कि कमिश्नर एग्जम्पशन वो कैसे किधर है। आपका गुजरात का कमिश्नर साहब बैठे हैं अहमदाबाद में, तो आपका किधर का भी ट्रस्ट है, वो टू ट्रैवल टू अहमदाबाद, व्हाई कांट दे डेलीगेट पावर्स टू द ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर? राजकोट के कमिश्नर को क्यों वो डेलीगेट नहीं कर देते? या एटलीस्ट जो हियरिंग है वो तो दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट, उसमें तो कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है कि सर्दी डिले हो गया तो उसको खाली वही देखने का कि जेन्युइन रीजंस है कि नहीं, तो स्टिल दे मेक यू ट्रैवल टू अहमदाबाद। एंड लेट मी टेल यू, थिंग्स आर नॉट दैट वेरी स्मूथ। आपका कॉन्वर्सेशन हो गया तो हो गया, नहीं तो वो खुन्नस में आ गए तो वो निकाल देगा कि सर योर रीजंस आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, जाओ, एंड दीज ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल इवन, राइट? तो आपको अदर इश्यूज, छोटे मोटे एक दो issues है, still we have time. Okay, now this I am going to demonstrate, of course, इसको लास्ट में ले लेंगे क्योंकि I have to just cut this. I have to show you a representation which I on my own had made to Commissioner Income Tax Exemption when he was here, I told you, at Gujarat, of course, and there was a close meeting organized at the Income Aikar Bhavan at this thing, and I was one of the invitees. There were and some CEOs and CFO of trusts, and there were of course couple of our professional friends also in that meeting, and everyone was given an opportunity to speak. And આપણે તો કઈ ત્યાં ખાલી બિસ્કિટ ને ચા લેવા તો નહોતા જ ગયા, and I saw to it I made my point. My turn came some last, and I had half an hour क्योंकि everyone had, क्योंकि कई बार the diplomacy really, I'm sorry to use this word, वो कमिश्नर है तो इसके नाम ने कैसे बोले, हमारा कुछ बुरा लगे, वो थोड़ा I'm always I do not endorse it, ठीक है सर ये issues, and he was gentleman, thorough gentleman, and he appreciated it. He told me that he gave me his personal mobile number. Of course, I'm not here to share my own this thing, and I have sent him this representation. क्योंकि he happens to be one of the 19 commissioner exemption all India, and he happened to be senior most, of course, वो साहब तो अभी उसकी ट्रांसफर हो गई, अभी कोई और कमिश्नर आ गए, but I would now of course like to show you कि क्या मैंने उधर लिखा था, a few things that are as a chartered accountant क्या बोलना चाहिए, that I made without any fear or favor या कुछ नहीं, and he was happy because उसको कुछ जो CIT systems होते हैं या DIT systems जो बोलते हैं, they have close nexus, and there are good suggestions they would take up. But I will take this last.
let me take to this very important judgment, friends. A very, very recent one. There are two judgments that I'm going to talk about. This in a little bit detail. Another one is just done. But that has changed completely the manner in which trusts are managing their affairs. Friends, it's New Noble Education Society and Chief Commissioner of Income Tax. ये बड़ा जजमेंट है, इट्स अ बिग जजमेंट. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डाउनलोड और गो थ्रू इट. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. उन्होंने सारी चीजें लिख के दी थी कि ये चीजें तो होनी चाहिए. इधर क्या हुआ था, लेट मी जस्ट ब्रीफली, कि इट इज दिस आंध्र प्रदेश, उधर से ये इसकी शुरुआत हुई थी समवेयर इन 1998. तभी आंध्र प्रदेश 1998 या समय आपकी उधर की हाई कोर्ट ने दिस न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी ने उसकी 1023C में अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन डाली थी. तो कमिश्नर साहब ने उसको रिजेक्ट कर दी. सब ने मतलब इट वाज रिजेक्टेड एट ऑल लेवल्स, राइट, विद फ्यू दिसिंग ऑब्जर्वेशन. Now here is an interesting and a very, very fine point which it took me lot many web pages to read to understand this judgment. But दो दिन से यही पढ़ रहा हूँ, so let me just okay. It is revolving around only one word. एक 1023C सेक्शन में है कि एनी ट्रस्ट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और मेडिकल और जो सब साथ में है, existing solely for education या medical purposes, right, and which is approved by commissioner, उसकी सारे इनकम एग्जाम्प्ट है, उसको कोई एप्लीकेशन मतलब इट इज इसके लिए रेड कारपेट है. वो वर्ड है solely. अब ये solely की मगजमारी 1998 से शुरू होके अभी सेटल हुई, लेकिन क्या धमाका करके गई. एंड लेट मी टेल यू, ईच एंड एवरी educational trust operating in India, definitely you pick up any business newspaper, this thing उन्होंने हेडलाइन करके इसको दिया है, राइट. अभी क्या है, खाली वो सोली के ऊपर उन्होंने जजमेंट नहीं दिया, बहुत सारी और चीजें लिख के दी. जैसे हमने अगला वाला जजमेंट में मतलब पूरा खुन्नस निकाला है, इधर भी कुछ ऐसी ही हालत है, और इधर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, राइट. सो एंड वेरी वेरी रीसेंट वंस and an alarming signal for all the charitable institutions. पहले तो सेक्शन देख लेते हैं. Any university, educational institution existing solely, इधर solely is the important word, for education purpose and not for the purpose of profit, other than ये 10AB, ACAD वो लिमिट वाला 5 करोड़ के 5 करोड़ तक तो आपका कोई यू आर अलाउड, तो उसके ऊपर ये भी है तो आप कमिश्नर की अप्रूवल लेके आपकी सारी इनकम एग्जाम्प्ट है. आपको खाली ऑडिट करवाने का, रिटर्न भरने का, एवरीथिंग इज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. इनफैक्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है. लेकिन इधर रिक्वायरमेंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी और ट्रस्ट एटसेट्रा टू सोली एंगेज इटसेल्फ इन एजुकेशन और एजुकेशनल एक्टिविटीज. ये ऑब्जर्वेशंस है कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के. engage itself in education or educational activities and not engage in any activity of profit means that such institution cannot have objects which are unrelated to education. આનું એક smaller version છે ને, it is always a battle here happening at Charity Commissioner office. It is like this, the charitable trust, you got your objects, let's say you got 10 objects, जिसमें से 8 ऑब्जेक्ट आपने एजुकेशन 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 डाल दिया, दो जनरल मतलब गरीबों ने मदद वगैरह वगैरह आपने डाल दिया, ओके. और आप प्री स्कूल कॉलेज सब कुछ चला रहा है, ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज, और आपकी पूरी इनकम आ रही है, और आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो किसी ने लेटर से ट्रस्टी ने या आपको कोई लेट मी टेल यू, आपने कुछ रेंट पे दे दिया, कुछ लेटर से यू गॉट अ हॉल, आपने कोई
छोटा मोटा फेस्टिवल आपने रेंट पे दे दिया, तो रेंट इनकम आ गई, आपकी स्कूल की इनकम आ गई, ठीक है। नाउ पीपल जनरली और क्योंकि चैरिटी कमिश्नर में क्या है कि इफ योर एजुकेशनल दिस थिंग और मेडिकल, तो आपको कोई कंट्रीब्यूशन 2% भरना नहीं पड़ता, तो जस्ट राइट अ नोट कि एक्टिविटीज दिस ऑब्जेक्ट्स आर दिस और दे विल पिक अप इज कि आपकी भैया रेंट की इनकम है, इसके ऊपर हम 2% डालेंगे। ऐसी दिक्कतें होती रहती थी। आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, लेट अस से इफ यू गॉट सेविंग बैंक इंटरेस्ट 100 रुपीज, तो 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन डाल देंगे, क्योंकि 100 रुपीज इज नॉट फ्रॉम योर एजुकेशनल एक्टिविटी, तो बैंक ने पैसा दिया हुआ, तो अभी नानकड़ी मगजमारी तो चालू जती। नाउ इट्स दिस थिंग, नाउ यू टू चेक अप ऑब्जेक्ट्स, even if you are not pursuing that object, let's say मेडिकल के ऑब्जेक्ट में आप कुछ नहीं कर रहे हो, खाली आपकी एजुकेशन ही है, फिर भी इधर बोल दिया कि नहीं आपको 1023C नहीं दी जाएगी, आपके सारे ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट है, तो क्या तो मैं काम कर सो। दैट मींस व्हेन यू आर प्रिपेयर, when you are forming a trust, the vision of the trust is very very important। कैसे ट्रस्ट बनाया गया ना, कॉपी पेस्ट 10-15 जे का ऑब्जेक्ट है, छोटा लिख दिया जावा जैसे। प्लीज डू नॉट रिसोर्ट टू दिस, कीप दिस इन माइंड, बिकॉज़ नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक टाइम था जब भी वो लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन मांग रहे थे, अभी तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन की न्यू रेजिम में कुछ नहीं मांगा, सबको दे दिया, बताने मजा आ उससे। तो थिंग्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इन 25-26 जब भी आपका रिन्यूअल आएगा। 22-23 में दे दिया, अभी 26-27 में आपको जाएंगे रिन्यूअल में, तभी सारी चीजें वो डिटेल में मांगेंगे। अभी तो कमिश्नर साहब को भी सारे पावर दे दी गई, वो वाला पहला वाला मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट, और इधर भी उन्होंने बेंचमार्क लगा दिया है कि कमिश्नर को क्या देखने का, ये जजमेंट में बता दिया। चलो पढ़ते आगे। All objects of the society trust must relate to imparting education or be in relation to education activities। एक भी हमको ऑब्जेक्ट होने चाहिए। The basic provision granting exemption thus enjoins that the institution should exist solely for educational purpose and not for purpose of profit requirement is categorical। It is categorical, right? आपका ये लॉ डिक्शनरी में उन्होंने बता दिया, कोर्ट ने क्या बताया, इधर क्या आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि सर उधर शब्द लिखा है सोली, मतलब मेजॉरिटी लाइन, सोली मतलब मेजॉरिटी, दे से नथिंग डूइंग, प्रीडोमिनेंटली वही चाहिए हमको और कुछ नहीं है, क्योंकि सोली को सोली पढ़ो, आप घुमा घुमा के मत पढ़ो, ऐसा कोर्ट ने उधर बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, उसने ये डेफिनेशन डाल दी है, सोली मतलब देखो ये डिक्शनरी में ऐसे ही, सोली मतलब सोली, डू नॉट स्ट्रेच द इंटरप्रिटेशन, राइट। Cambridge Dictionary and it depends solely to be only and not involving anything else. It is therefore clear that solely is not the same as predominantly. The term solely means exclusion of all others. आपने नहीं majority, majority नहीं बधाई, everyone, right? Because majority में minority तो आएंगे, ऐसा भी नहीं, exclusion of all others। So ये शब्द के ऊपर The Honorable Supreme Court denied exemption, उसे बता दिया कि जो हाई कोर्ट ने बताया है, जो आपके कमिश्नर साहब ने बताया वो सही है, और ये बेंचमार्क लेके, और अभी का जजमेंट इज अ वेरी वेरी रिसेंट वन, where the objective appears to be profit oriented। हाँ, एक और चीज प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड क्या है कि सर आप कमाई किए जा रहे हो। एक और जजमेंट है, एक कोई हॉस्पिटल का है, चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट फीस, कि भाई इधर सरप्लस मतलब दे, उधर तो वंस अगेन इट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, असेसिंग ऑफिसर ने एक एक चीज उधर से मांगी कि आपने कितने लोगों को चैरिटी की है, तो उसे बताया कि मेजॉरिटी कुछ 60-65 केसेस में खाली आपने थोड़ा सब्सिडाइज किया है, दैट मींस यू हैव नॉट डन एनी चैरिटी, आपका एग्जम्पशन विड्रॉ किया जाता है। मतलब लुक एट द, मतलब रेगुलेटर्स को कितनी एग्रेसिवनेस है, यू नो, दे आर रिमूविंग माय एग्जम्पशन एंड दे टू, यू नो, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो एट द सेम टाइम where surplus accrues in a given year or set of years per se, it is not a bar, आप सरप्लस कर सकते हो,
provided such surplus is generated in the course of providing education or educational activities. एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मेरी चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मैं कोई स्कूल कॉलेज वगैरह चला रहा हूँ, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे आ रहे, पीपल पे फीस, वेरी गुड, एवरीथिंग नाइस. माय टोटल रिसीट्स, लेट्स से माय टोटल रिसीट्स इज 3 करोड़. 3 करोड़ की मेरी इनकम है. 3 करोड़ में से 1 करोड़ मेरे को फीस आ रही है, 2 करोड़ मेरे को डोनेशन आ रही है. सिंपल, नो प्रॉब्लम. 2 करोड़ मेरे को डोनेशन आ रही है. मैं डोनेशन का कुछ नहीं, कॉर्पोरेट डोनेशन मैं खाली जमा ही कर रहा हूं. ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको जरा इसे कंपेयर करे देखो, कि सरप्लस हो रही है. एजुकेशन एक्टिविटी में से तो कोई सरप्लस नहीं हो रही है, राइट? दैट मीन्स यू आर परस्यूइंग सम अनदर ऑब्जेक्टिव, राइट? सो व्हेनेवर देयर इज अ सरप्लस एंड दैट टू आउट ऑफ अदर एक्टिविटीज, यू टू सी टू इट. रेंट की इनकम ले लो कि सर एटलीस्ट उसको मैं रेंट पर आप ही दी थी. स्कूल या उसका कोई हॉल है या कोई ग्राउंड है और बढ़िया सी आपको रेंट है, आप बड़ी अच्छी जीएसटी में भी रजिस्टर हो, एवरीथिंग इज लिंक्ड, सर एवरीथिंग इज नाइस एंड फाइन, वी आर अप्लाइंग 85%, सब कुछ ठीक ठाक है, सरप्लस खाली रेंट से ही आ रही है. यू आर नॉट प्रीडोमिनेटली एजुकेशन. एजुकेशन मतलब एजुकेशन. अभी तो डॉक्यूमेंट्स भी रखने का कि प्रॉपर्टी कितनी है, किधर से कितनी इनकम आ रही है, वो भी रखने का. इससे कंपेयर कर लो. सो नाउ एवरी ट्रस्ट व्हेन प्लानिंग इट्स अफेयर्स हैव टू बी डबल कॉशियस. क्यों कुछ भी पूछ सकते हैं टू रिमूव योर. अभी और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. कमिश्नर को क्या क्या करने का वो भी उधर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया. While considering the application for approval, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया 1023, commissioner is not bound to examine only the objects. खाली ऑब्जेक्ट देख के मत बैठ जाओ, आप सब कुछ देख सकते हो. नहीं तो अप्रूवल में 2 ही चीज देखते हैं, राइट? मैं पब्लिक चैरिटेबल हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट जेन्युइन है, एक्टिविटी जेन्युइन है, एवरीथिंग नाइस एंड फाइन, चलो मेरे को 1223C वगैरह दे दो. ये 1023C में है. That does not mean कि ये 12 में एप्लीकेबल नहीं होगा, जरूर होगा, राइट? They will come to you कि कमिश्नर साहब आप खाली उसने ऑब्जेक्ट लिख के दे दिए कि एजुकेशन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, तो 12 you got powers, please use those powers. હવે તો કમિશ્નર will not check up act, તમારી સામે જજમેન્ટ જ મૂકશે, જો આમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કહી દીધું. To ascertain the genuineness of the institution and the manner of its functioning, Commissioner is free to call for the audited accounts or other such documents for recording satisfaction where the society, trust or institution genuinely seeks to achieve the objects which it professes. ये सर खाली ट्रस्टी ने नोंदणी दाखलो जोइन 12 न आपी देवाय. Call for audited accounts, do deep diving into it. आप बोलो स्क्रूटिनी वो भी कर लो, right? You have all powers, you please do it. The commissioner or other authority is not in any manner constrained from examining accounts and other related documents to see the pattern of income and expenditure. देख सकते हो कि सर ये इनकम इधर से आई, सर वो तो डोनेशन है, वेरी गुड. किसने दिया डोनेशन? सर चेक से है डोनेशन. किसने दिया? सर एक और ट्रस्ट है, उसकी डिटेल मंगवाओ, उसमें कौन ट्रस्टी है, उसको डोनेशन किसने दिया, वो भी आप मांग सकते हो, राइट? सो वन हैज टू, इसमें ऐसा ही कुछ हुआ था. सो वन हैज टू बी डबल क्वेश्चन. इट इज हेल्ड दैट नाउ दिस इज समथिंग the nastiest amongst all. It is like this. Charitable trust, religious trust, 12 લેવું શું કરવાનું હોય સાહેબ? આપણે તમે ચેરિટી ઓફિસમાં નોંધાવી દો, ટ્રસ્ટી નોંધણી દાખલો લાવો, મેં તો દસ ગુડ. એક લાઈન ઉધર भी સુપ્રીમ કોર્ટ ने डाल दी. સર હવે ચેરિટી કમિશનરે નોંધ્યું ન હોય તો ટ્રસ્ટ એમાં 12 મળે કે નહીં?
Let's say there is a trust. I am not registered with Charity Commission Office. Can you get registration benefit under income tax? चलो मैं ऑडियंस आपको पूछ रहा हूँ, कायदे में लिखा नहीं है, अब तक नहीं था, अब तक नहीं था, वो अलग चीज है, वी वर गिविंग देम, लेकिन कायदे में किधर नहीं लिखा था? उधर तो लिखा था कि चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, बाकी कुछ नहीं लिखा था। स्टेट लॉज अथॉरिटी वो जाने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। देयर वाज एक केस, एक इधर का ही एक केस है, उसमें भी बताया गया कि यू रजिस्टर्ड नहीं, व्हाट इज दैट टू डू विद योर रजिस्ट्रेशन, यू टेक योर व्यू। आपको लगे कि हाँ ऑब्जेक्ट चैरिटेबल और आपके पास पावर्स भी है, इफ दे आर परफॉर्मिंग नॉन चैरिटेबल तो हटा देना उसका एग्जम्पशन। अब तक नहीं था, लेकिन नाउ कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया और आपके फाइनेंस एक्ट 2022 में भी उन्होंने डाल दिया। लेकिन बाद उधर से आई सी समथिंग मोर, ये पॉइंट आई रिफर्ड एल्सवेयर आल्सो इन वन ऑफ द सेमिनार्स, दिस इज समथिंग हॉरिबल। वो द नेक्स्ट स्लाइड वो पॉइंट पे आ रही है। It is held that wherever registration of trust or charities is obligatory under state or local laws, etc., seeking approval should also comply with provisions of such state law. इस केस में उन्होंने जो आंध्र प्रदेश का स्टेट का एक्ट था उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, एक और लिया था, लेकिन जो एक और लेने का तो नहीं लिया था। So what is that to do with this? I'll tell you my own this thing. In one of the trust, we had taken foreign donation, तो ट्रस्ट ने लिया, लेकिन FCRA का अप्रूवल नहीं था, और साइजेबल अमाउंट थी। आई हैपेंड टू बी ऑडिटर एट दैट टाइम, बट थैंक गॉड अभी मैं नहीं हूँ उधर, राइट, तो अभी बोल सकता हूँ। एनीवेज, मैं I'll not tell why मैं अभी नहीं हूँ। So उसका 143(2) आया, कंकोत्री आ गई, and everything went well, ऑर्डर भी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। FCRA ऑफिसर ने फुल फॉर्म इन तो आवड़તું કે FCRA એટલે શું, so I had a board time, અને આખે આખું ડોનેશન એમને નીકળી, તો the amount was huge, substantially huge, and it was a religious trust. એટલે એને મને એક પૂછ્યું, એટલે ત્યારે તો ડોક્ટર સાહેબ આપણે ડોનેશન ટ્રક ભરીને પહોંચ આવશે, તમે કયો ત્યારે લઈ આવો, અને જેન્યુઅલી દેવર રિસીટ્સ, ટ્રક ભરીને આવશે, તમે કહેશો એટલે હું લઈ આવી ફિઝિકલ સ્કૂટરની ઉસ ટાઈમ, એટલે वो ऑफिसर के ठीक છે વાંધો નહીં, અને ऑफिसर हैपेंड टू बी विद ऑल हम्बलनेस भक्त ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, मेरे को मालूम नहीं था, तो उसको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, बी इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट, जो कुछ भी था वो निकल गया असेसमेंट, बात खत्म हो गई, सब कुछ सेटल हो गया, मेरे पास ऑर्डर आ गया, आई एम हैप्पी, ऑफिसर हैप्पी, ऑफिसर को क्लाइंट ने हैप्पी कर दिया, मतलब एवरीथिंग वाज हैप्पी। बाद में वन फाइन इवनिंग कुछ 6:30 बजे मेरे को एक फोन आया कि सर તમારું પેલું એસેસમેન્ટ છે ને એજી ઓફિસ વાળા આવ્યા તો આવો ને ચા પીવા, એ ચા પીવા બોલાવે ને એટલે ધમાલ જ હોય, એટલે આવો ચલો વાંધો નહીં, ઠીક છે। So I went there. That officer happened to be smart. तो दो लोग थे इधर, ऑपरेटर चेयर ऑफिसर थे। अभी वो जिसने असेसमेंट किया था वो तो उसकी ट्रांसफर होकर भी कोई और ऑफिसर था, he happened to know me and he called me up and said okay sir, ठीक है। Then this officer told me, who are you? I said sir I am, what's your name? I said Darshan. I didn't tell him that chartered accountant में चट्टा, ठीक है, he didn't ask me, I didn't bother to tell him. So he told me, Mr. Thakkar, you have taken donation. I said yes, I have taken donation. Fortunately or unfortunately, आप जो कुछ भी बोलो, આપણે it was in Gujarati, general donation અને વિદેશ દાન, કેમ કે ક્લાયન્ટે હેડ જ પાડ્યું હતું ને વિદેશ દાનની રકમ લખી હતી, એટલે એને એ બોલ્યું કે what this विदेश दान, उसको थोड़ा बहुत एक्चुअली वो नॉन गुजराती था, लेकिन ही न्यू कि ये क्या है, he could get that word विदेश, ત્યાંથી એને પકડ્યો, એટલે મને કે આપને ડોનેશન लिया है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, I said yes sir. तो he
he told me, मेरे को स्क्रीन दे दिया कि ये जाओ आप FCRA की वेबसाइट पे मेरे को इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो। मेरे को पता नहीं था, वो पूरा होमवर्क करके बैठा है, राइट। देन आई न्यू कि क्या चीज़ थी। एक्चुअली आवर रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड, राइट। तो फिर भी क्लाइंट ने लिया। तो आई टोल्ड हिम कि सर ये रजिस्ट्रेशन तो अभी देखना पड़ेगा। आई जस्ट ट्राई टू वाइप अवे द थिंग्स एंड ही टोल्ड मी नहीं आप बताओ। ऐसे नहीं सर रजिस्ट्रेशन से। देन आई टोल्ड हिम कि सर व्हाट इज FCRA registration to do with income tax? And they don't like big blow for him कि सर मैंने यदि नहीं लिया है तो MHA वाला मेरे को पकड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाला मेरे पीछे पड़ेगा, मेरे को जेल में डाल देंगे, मेरे को ये करेंगे वो करेंगे। बिकॉज आई फेस इट, उसकी स्क्रूटिनी भी दी, आई फेस MHA स्क्रूटिनी, मतलब नॉट गोइंग इनटू जेल, लेकिन वो क्या स्क्रूटिनी करते मेरे को मालूम था। इसे मतलब सर वो ज्यादा बिकॉज इन वन अनदर ट्रस्ट सेम इशू हुआ था, वी वर कॉल्ड एट दिल्ली। उसने देखा ट्रस्टी को देख के वो बोला ठीक है आप शांति से रहो, ये हैपेंड टू बी लेडीज वगैरह था। इफ इट इज अ जेन्युइन डिफॉल्ट दे कंडोनेट, और कंडोनेशन का ऑर्डर भी गया, वो बड़ा प्रोसीडिंग होता है। वी फेस इट, तो मेरे को पता था कि सर MHA ज्यादा से ज्यादा MHA वाले क्या करेंगे कि सर ये इंटरनेशनल है, वो प्रूव करके दो, 5 रुपया 10 रुपया को कहे पे मैं हूँ इंटरनेशनल, यू कैन फ्लो। मैंने तो ये भगवान मतलब रिलीजियस एक्टिविटी में डाला। He noted that point, friends. And next to next year, I see that provision coming into the statute book. So whenever AG office वाला कुछ बोलता है या कुछ पूछता है, there is always something fishy there, right? So I could surprisingly see this provision coming, traveling into the statute book, जहाँ लिखा है कि compliance of such requirement of any other law for the time being enforced by trust or institution is a material for the purpose of achieving its objectives. કર્મચારીને 15,000 રૂપિયાનો પગાર આપ્યો હોય અને 200 રૂપિયા વ્યવસાય વેરો ન ભર્યો હોય તો આમાં કવર થાય કે નહીં વિચારી લેજો। તમે કહો સાહેબ ડિડક્શન આપવું હોય તો 200 રૂપિયા વ્યવસાય વેરો તો ભર્યો નથી, right? So these are things which have actually traveled into now into the statute book. One has to be very, very cautious. They are also embarking upon state legislations or any other law. India માં ધારો કે એક એન્ટિટીને કેટલા કાયદા લાગુ પડે, બિઝનેસ એન્ટિટી આપણી પાસે બધાય આવે છે ને, લાઈક I had a client, they are into exports, a new client, મને લગભગ 18 જુદા જુદા કોમ્પ્લાયન્સ બતાવે। મને કહે દર્શકભાઈ તમે આમાંથી કેટલું હેન્ડલ કરી શકશો, એટલું અસાઇનમેન્ટ તમને આપવાનું છે, ઓલ ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ નહીં। So one has to be cautious introduction of this provision. कोर्ट ने आगे बताया कि this court is further of the opinion that since the present judgment has departed, देखो उसके wordings है, has departed from the previous rulings, क्योंकि क्वींस एजुकेशन सोसाइटी का जजमेंट था, एक और अमेरिकन करके वो जजमेंट था, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरे उल्टा के ये जजमेंट लगा दिया। दे रिफर्ड आल्सो, राइट, कि वो जजमेंट को अभी ये जजमेंट रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि उधर थोड़ा सॉफ्टर व्यू लिया था, तो सॉफ्टर व्यूज आर नाउ गॉन, अभी ये जजमेंट है। तो ये कोर्ट, ये लास्ट उसका पैरा में क्या लिखा है कि हैज डिपार्टेड फ्रॉम द प्रीवियस रूलिंग्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ सोल लीव। आगे पढ़ो, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिसरप्शन and to give time to institutions likely to be affected to make appropriate changes and adjustments, it would be in the larger interest of society that the present judgment operates hereafter। मतलब thankfully उसकी prospective effect दी है, नहीं तो सबका रीओपनिंग होके एनी कोई भी ट्रस्ट में उठा लो, किसी का भी डीड पकड़ लो तो रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली जाएगा। एक और जजमेंट है, ऑफ कोर्स ये भी वेरी रीसेंट वन, 8/12/2022, ये कुछ फर्नांडोस फाउंडेशन, ये क्या था, एक अपना वो हॉस्पिटल वाला था।
So 5-star charitable trust, now your days are over. जो 5-star charitable trust जिसको बोलते हैं ना, you go there, you don't feel it's a charitable trust. Have a look at this judgment. Either way, same. ये तो ट्राइब्यूनल का जजमेंट है, बट ये सब में वो सारी, क्योंकि इसमें वो सुप्रीम कोर्ट के सारे, दिस केम आफ्टर ऑल दोस जजमेंट्स, इसमें अक्टूबर का वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का रेफरेंस भी है, राइट? और एक और औडा का जजमेंट भी आया है, देयर आल्सो यू नो कि एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी क्या है, किस तरह से आपको ऑब्जेक्ट्स को देखने का, एवरीथिंग हैज बीन कैटेगोरिकली लेड डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वो दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, एक ये और एक जो पहला हमने डिस्कस किया, वो चीज है। फ्रेंड्स, of course a small point when it comes to GST matters, there is only one point that I picked up, क्योंकि ये पॉइंट कल ही मेरे क्लाइंट में ट्रिगर हुआ है। of course I want that, but let me see what's the fate of it, and I thought fit to incorporate this slide. इसको जरा पीछे से मैंने लगाया, so let me see, there are only 2 slides and then we can see. देखो जीएसटी में एप्लीकेबिलिटी, वी ऑल आर अवेयर अबाउट एग्रीगेट टर्नओवर, योर लिमिट्स, योर 20 or 40 lakhs or 10 lakhs in special territories. Now what is this aggregate turnover? Aggregate turnover, I am looking at GST applicability vis-a-vis charitable trust. We generally ये परसेप्शन है कि भैया हम तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमें और जीएसटी से क्या लेना देना, आई एम रजिस्टर्ड अंडर 12, बेटा देख लो उधर है, राइट? तो खाली सेक्शन देख लो, एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग दिस, और एग्जम्प्ट सप्लाई को भी गिन लो, बाद में आपका टर्नओवर देखो। एग्जम्प्ट सप्लाई क्या है वो भी डिफाइन किया गया है आपकी 247 में, जिसमें लिखा गया है नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी। So in a case of trust, interest income, non-taxable supply, અને રદ્દી વેચી હોય 100 રૂપિયાની, હું આવું કે નહીં? મારી 20 લાખ રૂપિયાની વ્યાજની આવક છે, 100 રૂપિયાની રદ્દી વેચીને ભંગાર વેચો, હું જીએસટી માં કવર થાઉં કે નહીં? Friends, with this of course I will take you to my representation. There is a question going to be pondered, so I thought fit. Now I will, it is of course obviously it is of course, now I will take you to that representation part letter which I have drafted, from which one very very important point is arising. Actually no one has literally looked at that point, and it is creating some hardships to the SSC, so if with your permission I will just cut the presentation here, and this is my it was 17th June the meeting that happened at Rajkot, and my representation went with form number 10BD, that statement of donation that we upload. Something very interesting is happening online, and probably even I was unaware about it, and I thought it fit, I can put it on this platform. Let us see a small point emerging out of it. देखो पहली चीज के नो वैलिडेशन हैपनिंग व्हेन द डेटा इज बीइंग अपलोडेड। आपने एक डेटा 2 बार अपलोड कर दिया, सेम सेट ऑफ डेटा, देयर आर नो वैलिडेशंस। ये आज की तारीख में ही हो रहा है। दिस एक्चुअली हैपेंड इन माय केस। व्हाट हैपेंड इज, लेट्स से in a trust there are 3 receipts only, 3 receipts, let us have 1 lakh rupees each. तो 3 ही एंट्री थी, वेरी सिंपल, ऐसे क्लिक करके अपलोड कर दिया। एंड एक्चुअली ये है, एक्चुअली जो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रही हूँ वो एक्चुअल है। मैंने 28 अप्रैल को दिया, वो अपलोड हो गया, सॉरी 27 अप्रैल को, नीचे वाला
वो फॉर्म सबमिट हो गया। देखो नीचे वाला है वो मैंने पहले अपलोड कर दिया। नाउ जस्ट टू टेस्ट, वो टेस्ट करने के लिए वो वही डेटा लेके मैंने फिर से अपलोड किया। देखो वो भी अपलोड हो गया। आज की तारीख में बोथ रिटर्न्स आर एक्सेप्टेड। ये आज की तारीख में एरर है, એટલે આમ બે વાર બટન દબાવો ને બે વાર રિટર્ન છે, નો વેલિડેશન हैपनिंग। दिस इज द बिगेस्ट फ्लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज होती है, इट शुड ट्रिगर सम वार्निंग्स हियर। नहीं तो ईच व्यक्ति ने लेट्स से दैट इफ दिस डेटा इज ट्रैवलिंग, जो नहीं ट्रैवल हो रहा है अब तक, इफ इट्स ट्रैवलिंग टू माय एस या टिस या फॉर्म 26 एस, क्या पता मेरे को 2 बार डिडक्शन भी मिल जाए, राइट। लेट्स सी हाउ दोस टेकी गाइज आर डिवाइसिंग द सॉफ्टवेयर्स, सच चैलेंज फॉर देम। एनीवे, ये बड़ी खतरनाक चीज है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबली द लास्ट फॉर द डे। दिस इज एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। देखो लास्ट डेट क्या है, 31 मई टू अपलोड माय फॉर्म 10BD। If I am doing it before 31st May, everything is nice and fine. But if I am missing the deadlines, जैसा TDS में हो रहा है, वैसे वो लोग 200 रुपया पर डे केवल 200 પણ લગભગ 2000 કરોડ રૂપિયા કમાઈ લીધા છે ડિપાર્ટમેન્ટે। હા, so 200 rupees they charge. Now TDS returns all of you have filed, you are aware there is something called fresh filing. That means you file a return, that's your original return that you file. Now you can move the return in any way you like by revising, you filing a revised statement. Let's say there is an entry missing, so you can always add that return. There is entry that needs modification, you can always revise that return. But ultimately everything will revolve around your original return file. If your platform is working on the same thing, तो स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन में भी वही होना चाहिए। कायदे में उन्होंने लिखा है, प्रोविजन में भी लिखा है कि सर जी आपने 31 मई पहले सब कुछ कर दिया, अच्छी बात है, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने का है, डिलीशन करने का है तो कर सकते हो, उतने तक ही बोला। मैं एक और सिनेरियो जो उन लोगों ने अभी तक एड्रेस नहीं किया है वो ले रहा हूं। फ्रेंड्स, इट इज लाइक दिस। I have filed my 10BD before 31st May, जिसमें 3 एंट्री मैंने डाली। There are 3 donors A, B, C, जो चीजें let's say 1 लाख each, 3 लाख का मैंने अपलोड कर दिया। My compliance is done. I believe 234G section या। अभी 31 मई के बाद एक और डोनर आया कि साहब આમાં તો એવું હતું ને કે ટ્રસ્ટ વાળા आपके पास आए કે સાહેબ 4 ડોનર હતા, 3 નો તમને પાન નંબર મારી પાસે હતો, તમે પાન નંબર ગયો, પાન નંબર ગોતવામાં વાર લાગી, ડોનર બારગામાં તો વોટેવર રીઝન। આ ચોથો ડોનર છે, એને 1 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે, એનો પાન નંબર આવી ગયો, જલ્દી જલ્દી એને પેલું 10BE સર્ટિફિકેટ આપો સાહેબ, એટલે એને બાદ મળે, એનો વકીલ રિટર્ન નંબર, નોર્મલ થિંગ યુ હિયર। आप बोले ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ एन एंट्री, दिस इज अ केस ऑफ नॉट डिलीटिंग एन एंट्री, दिस इज अ केस ऑफ एडिशन ऑफ एन एंट्री। साहब 1 लाख रुपया नो डोनेशन आप्यो, काई वांधो नहीं। अभी आप जैसे ही वो करने जाओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्या होगा एक रियल लाइफ सिनेरियो आपको दिखाता हूं। मेरा पहला स्टेटमेंट आप इधर देख सकते हो, 28 मई को गया, 28 मई को ये रहा, 31 मई was my last date, गया। बाद में वो ट्रस्ट वाला आया कि साहब હવે 5-6 વધારે ડોનર નું લિસ્ટ આ છે, તમે ને ચડાવી દો। આપણે ચડાવ્યું, હવે દરેકના સ્ક્રીનશોટ તમને બતાવું શું હાલત થઈ। जैसे ही मैं आई एम ट्राइंग टू अपलोड, व्हाई मेरे को ये वार्निंग आती है कि सर जी आप तो डेडलाइन चूक गए, अभी आपको 234G के लिए आप तैयार रहो, ये वार्निंग स्क्रीनशॉट। I have already filed a statement, TDS में भी if you file a statement no problem,
रिविजन ऑफ अ स्टेटमेंट इंक्लूड्स एडिशन ऑफ एन एंट्री, ऐसा उधर है सिस्टम में, इधर नहीं है. रिविजन ऑफ अ स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड एडिशन ऑफ एन एंट्री, ट्रिगर हो जाएगी पेनल्टी. भाई आ क्या नो है, एक तो तुम्हारी 234 ની સિરીઝમાં તમને લોટરી જ લાગે, એમાં યાર જી સી પછી બધા ધમાલ છે. 234 સી પછી ડી ઈ એફ, એમાં બધા પૈસા જ મળે છતાં આ જી હજી તો ઝેડ સુધી પહોંચવાનું પાણી, પછી એ બી એ सी. तो ये हमने लिखा. तो क्या पेनल्टी होती है, कैसे चीजें निकलती है. आई हैव गिवन दिस एक्सप्लेनेशन. नाउ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और विथ ऑल हम्बलनेस, हमने उधर भी 2-3 लाइन પછી થોડો તડકો લગાવી દીધો कि involving chartered accountants in technical and technology aspect of forms and returns. Why can't you tell institute जिसके 2-3 लाख 3 लाख chartered accountants है, who are more competent than you call any person technical person. Though we may not be good programmers, लेकिन कायदे तो समझते हैं. जैसे दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी फॉर कन्वर्टिंग टू डबल एंट्री इट अप्रोच इंस्टीट्यूट, या रेलवेज के सम दिस थिंग इट अप्रोच इंस्टीट्यूट. व्हाई कांट फॉर दिस मैटर डिजाइनिंग ऑफ फॉर्म्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्म 10B में जैसे कमिश्नर साहब आए थे, वो 10B फॉर्म क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट ट्रस्ट का 4 पन्ने का होता है, वेरी वेरी इजी टू फिल अप, जिसमें 90% इज नील एंड और 99% इज नील एंड नॉट एप्लीकेबल. 3-4 फिगर लिखो. नाउ दीज वेर हिज वर्ड्स, एंड आई विश द जेंटलमैन इज proved to be wrong. These were his words. Be prepared for 24-page form 10B. 24 पन्ने का हम फॉर्म 10B डालने जा रहे हैं. Be prepared, right? So I wish वो दिन कभी ना आए. So with this, of course, extremely thankful to Rajkot branch from the bottom of my heart for giving me this opportunity, and all you dear friends for a very very patient listening. Thank you.